PPT is visible, right? Introduction Yes, to sir. Revit. Okay. Agenda. Let us see the agenda. What is our agenda today? We will spend around 10 minutes on the introduction of Revit. Then we will compare the AutoCAD and Revit. Okay. For another 10 minutes. Understanding the Revit interface. And then we will be spending around 40 minutes on the Revit interface. I'll show you. Okay. How does it looks like? The screen, the landing page and all. Hands-on practice will not be able to do that because you have not installed Anurag. So for that reason, we'll not be able to do hands-on practice. But no worry. Today we'll be considering only on the introduction part, right? That being said, question and answers for the next 5 minutes if you have any. Otherwise, we will, end the session. Okay. So Revit. Okay. What exactly Revit is? Do you know the full form of Revit? Any one of you? There is a full form of Revit. I mean, Revit is a short form or abbreviated form. What is No, it? sir. No. Okay. No. So Revit is No, sir. basically some people say revise it, revise it. Okay. And when you Google it, you will also find that revise instantly. Instantly, matlab ekdam se, right? Instant means within within 1 or 2 minutes or within seconds. Revise instantly or revise it. All right. So Revit is a building modeling Okay, sir. software used for सर design चैट and बॉक्स में सर चैट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा एक बार नोट्स में तो ठीक रहेगा ना सर. no worries. Sure. So I said revise it or revise instantly. Full form of Revit. Revise it or revise instantly, right? It's a building information modeling software, okay, which is used for design. We design it, we model in the Revit and documentation. Documentation means we can prepare sheets, just like AutoCAD, where we prepare sheets, drawing sheets I'm talking about. We can also prepare those pre-documentation in Revit. Okay, we can model Okay. 3D things, the 3D modeling will be there. Quantification we can do. We can prepare sheets like 2D sheets, which we basically issue for the construction or for the installation at the site. We can prepare the documentation as well. Supports architectural, structural, and MEPF disciplines. MEPF is nothing but mechanical, electrical, plumbing, and firefighting. Mechanical, electrical, plumbing, and firefighting. Okay, MEPF discipline. It supports all the disciplines which have been mentioned. All right. Revise it or revise instantly. Okay, it was developed by Charles River. Charles River Software, founded in 1997. Renamed as Revit Technology Corporation in 2000 and acquired by Autodesk in 2002. So basically, currently it is an Autodesk product, right? Everybody knows about it. Like everybody knows, okay, it is an Autodesk software, but it was not actually, invented by, founded by some other company, and before that it was founded by some other, person or a software developer. Charles River Software, 1997, renamed as Revit Technology Corporation in 2000, and finally acquired by Autodesk in 2002. Correct? This is a bit kind of, small history about Revit. All right. Benefits of Revit. What are the benefits? We can do parametric modeling and documentation.
we will come to know what is parametric. Parametric means, for example, both of you are aware of working with AutoCAD, right? AutoCAD में दोनों को काम करना आता है, basic Yes, sir. basic. So parametric Yes, is sir. like, for example, uh, let's say you are working as an interior designer, okay? And in interior designing, you have to use different sizes of chair, tables, okay, and other furniture. So parametric modeling means there is one static modeling. Static means, for example, you are using 4 types of tables, okay? You have to create 4 types of tables: 1 type, 2 type, 3 type, 4 type. This is static modeling which we do in AutoCAD. हमें 4 अलग-अलग तरीके के tables prepare करने हैं. But what happens in Revit? In Revit, we have an option of parametric model. Parametric में क्या होगा? I will prepare one table only. Okay, one table, and I will provide some parameters: length, width, thickness, height, number of supports. Okay, and then I'll give some parameters. So next time, let's say I have to use another size of table. Okay, so I can directly go to that table and I will edit the dimensions. It will automatically reduce the size or increase the size. Okay, so I can easily prepare 4 type or 5 type or n number of types, table. एक ही table से I can prepare multiple types of table. ठीक है? I will not be, I mean, there is no need to prepare, there is no need to create 5 types of table, different. एक ही बनाऊंगा मैं and I will provide some parameters. उन parameters के change करने से मेरी पूरी table change हो जाएगी within minutes. ठीक है? That is known as parametric modeling. Collaboration through shared models. Collaboration. That means we can collaborate in Revit. ठीक है? जैसे LAN में हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसी तरीके से if we are using cloud services, cloud प्लेटफॉर्म. क्लाउड क्या होता है? रियल टाइम में हम कनेक्टेड है, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है. ठीक है ना? जैसे गूगल शीट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड, राइट? सो गूगल शीट में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू मेक सम चेंजेस, देयर इज नो नीड टू सेव इट, इट विल ऑटोमेटिकली गेट सेव्ड ऑन द क्लाउड. एंड नाउ एल्ड्रिन हैज टू मेक सम चेंजेस. एल्ड्रिन ने कुछ चेंजेस किए एंड वो अपलोड कर दिया फिर से क्लाउड पे. सो आई कैन सी इन द रियल टाइम, अगर इफ यू आर मेकिंग सम चेंजेस, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा होगा क्लाउड पर. ओके, देयर इज नो नीड टू सेव इट, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और उसमें रियल टाइम चेंजेस होते हैं. ठीक है? कोलैबोरेशन, लोकली कोलैबोरेशन एक होता है, जैसे हम लैन एरिया से कनेक्ट होते हैं, वैन एरिया से कनेक्ट होते हैं. उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जांपल, यू हैव बीन सिटिंग इन नागालैंड, अनुराग इज इन उत्तराखंड, आई एम इन दिल्ली. We can work on Revit in the real time. Okay, if we are connected on cloud platform ACC, Autodesk Construction Cloud, we can work directly at the same time on Revit by collaboration. Okay, and it was not there before 2012. What sharing was option wasn't there. Enhanced visualization and analysis tool. Obviously, Revit may, if you compare a Revit drawing with your 2D drawing or AutoCAD drawing, there is a lot of difference in visualization. Is it clear until now? Yes, sir. Okay. AutoCAD versus Revit. In AutoCAD, we can primarily do 2D drafting. सबको पता है, majorly AutoCAD we are using for 2D drawings. That's it. We do have option of 3D modeling, but I haven't seen people using AutoCAD for 3D modeling. मैंने बहुत कम लोग देखे हैं those are using AutoCAD for 3D model. होता है उसमें, there are options, we can do that, but majorly AutoCAD is being utilized for 2D drawings. एग्री करते हैं इस बात पर? Yes, sir. Revit, a building information modeling
software focused on architecture, structural engineering, MEP. We can do modeling, 3D modeling. In Revit, we are not just doing 3D modeling. Okay. Apart from 3D model, it is an intelligent model. It is a model which is information rich. मतलब हिंदी में मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि 3D मॉडल आपने एक ऑटोकैड के अंदर बनाया, वो सिर्फ एक एस्थेटिकल पर्पस के लिए यूज होगा. दैट विल गिव यू ओनली द 3D elevation or 3D shape of the building, right? Same model if you are preparing Yes, in sir. Revit में, फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट मी मेक यू वेरी सिंपल फॉर यू. एक 3D मॉडल आपने एक बिल्डिंग का, एक घर का 3D मॉडल यू हैव प्रिपेयर्ड इन ऑटोकैड. सेम मॉडल यू हैव प्रिपेयर्ड इन Revit, करेक्ट? नाउ इफ यू क्लिक ऑन ऑटोकैड मॉडल, आप गए, आपने, यू हैव क्लिक्ड ऑन अ वॉल. ठीक है, ऑटोकैड में जो 3D में बनाया आपने उसकी वॉल पर क्लिक किया, इट विल जस्ट शो यू, मे बी इट विल टेल यू कि ये वॉल है. ठीक है, इट विल शो यू दैट दिस इज जस्ट अ वॉल. या फिर मैक्स टू मैक्स इट विल गिव यू द डायमेंशंस, राइट? लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, वो भी आप उसको मेजर करोगे, देन ओनली इट विल गिव यू. हाउएवर, अगर सेम मॉडल आपने रेविट के अंदर भी बनाया एंड इफ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन एनी एलिमेंट ऑफ रेविट, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वॉल पे क्लिक किया, इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल. उस पर्टिकुलर वॉल की आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज वो देगा, वेदर इट इज अ 230 thick wall, whether it is a generic wall, whether it is a concrete wall, how much thick is, how length is, right? उस पर पेंट है या नहीं है, whether paint it has been painted or not, whether it has been plastered or not. Okay, any other property, if you want to see concrete property, let's say there is a wall, concrete wall or structural wall, if there is any steel in is there or not, correct? If this is a concrete wall or a brick wall, so brick का properties क्या है, which type of brick you have used in that particular wall, which type of concrete you have utilized for the creation of that wall. So ये इंफॉर्मेशन रिच मॉडल है, मतलब इसमें यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर एज 3D मॉडल ऑफ ऑटोकैड में आपको कुछ नहीं मिलेगा. जस्ट लेयर मिल सकती है, उस पर आप क्लिक करेंगे, इट विल शो यू कि वॉल है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू वॉन्ट गेट एनी इंफॉर्मेशन. वेयर एज रेविट का कोई भी मॉडल होगा, उस मॉडल पर आप क्लिक करें, कॉलम पे क्लिक करें, आप उसकी वॉल पे क्लिक करें, आप उसके रेलिंग पे क्लिक करें, आप उसके मे बी स्टेयर केस पे, वेयर एवर यू वांट टू क्लिक, you just click on that, it will give you a lot of information about that. That is why it is known as intelligent model, information rich model. Understood? It will Yes, sir. automatically prepare the BOQ, maybe BOQ or quantity as well. Whereas AutoCAD के आगे किसी वॉल पे या किसी मॉडल को आप डायरेक्टली कांट एक्सट्रैक्ट द BOQ, बट Revit में आप कर सकते. क्लियर है? यस सर. Okay. Parametric modeling with dynamic relationships is not possible. I have just explained you in the last slide that what is parametric modeling. Okay, parametric modeling is not possible in AutoCAD, right? Whereas it is possible in your Revit. You can prepare single door. You can prepare a layer. Single door family. As in जैसे फैमिली का मतलब है, रेविट में हम फैमिली बोलते हैं. जैसे मान लीजिए डोर का, एक डोर है, डोर की एक फैमिली है, एक वॉल की एक फैमिली है, कॉलम्स की एक फैमिली है. ठीक है, एंड विंडोज की एक फैमिली होती है पूरी, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज होते हैं. जिस तरीके से ऑटोकैड में हम उसको आई थिंक ब्लॉक बोलते हैं, राइट एंड्री? कोई चीज हमें रेडीमेड यूज करनी है, जस्ट लेट्स से आई नीड टू यूज सिंबल ऑफ कार, तो कार को मैं डायरेक्टली जाकर वहां से कॉल करके उसमें सिंबल अपनी ड्राइंग में यूज कर लेता हूँ. इसको हम ब्लॉक बोलते हैं ना ऑटोकैड में, बट वी कॉल दैट इन ऑटोकैड. हेलो, यू पीपल आर देयर और नॉट?
हाँ सर, ब्लॉक बोलते हैं सर, सही बोल ठीक रहे है। हैं। हाँ। यस। सो उसी के कंपैरिजन में, लाइक इन कंपैरिजन टू दैट, रेविट अगर हम यूज करते हैं तो रेविट में हम कोई भी सिंबल, कोई कॉलम, लेट्स से आई आई एम यूजिंग कॉलम, तो कॉलम की एक फैमिली होती है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम होते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉलम। तो कॉलम की एक पूरी फैमिली है, विंडो की एक पूरी फैमिली है, बोर्ड की एक पूरी फैमिली होती है, ठीक है। दोज फैमिलीज आर पैरामेट्रिक, दैट मीन्स एक और एक, फॉर एग्जांपल मैंने आपको वॉल का एग्जांपल, टेबल का एग्जांपल दिया था। मान लीजिए एक बिल्डिंग में मुझे 10 टाइप्स ऑफ डोर्स यूज करने, ओके। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट 10 टाइप्स ऑफ डोर्स। मैं क्या करूंगा, एक टाइप ऑफ डोर आई विल क्रिएट एंड देन उसी की पैरामीटर्स में, उसमें आई विल प्रिपेयर, आई विल पुट सम पैरामीटर्स। एंड फॉर एग्जांपल मुझे 2 फीट का डोर यूज करना है, आई विल यूज 2 फीट। देन मुझे नेक्स्ट में 3 फीट का यूज करना है, आई विल मेक इट 3 फीट, जस्ट चेंजिंग द डायमेंशंस, ओके। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम ऑटोकैड में एडिट करते हैं डायमेंशन, तो एडिट करने का मतलब ये है कि एक्चुअल में इफ दैट इज 2 फीट एंड आपने डायमेंशन एडिट करके 3 फीट लिख दिया, तो पीपल विल कंसिडर इट 3 फीट अनटिल और अनलेस कोई उसको स्केल नहीं करेगा, ठीक है, राइट। दिस इज द बिल्कुल। वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। रेविट में ऐसा नहीं होता है। रेविट में क्या होता है, द मोमेंट यू आर चेंजिंग द डायमेंशन, 2 फीट को आप 3 फीट बना रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो चेंजिंग द डोर, मतलब उसका एक्चुअल साइज इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। करेक्ट। Okay, the workflow involves manual updates. If you change a drawing in one view, updates to another view are not automatic. AutoCAD may, let's say you have five drawings and you have to make a change in one drawing. और वो जो change आपने एक drawing में किया, it is reflecting in all the 5 drawings. Now what you do is, what you have to do is basically you need to go to manually to each drawing one by one. First drawing may you have to make changes, then again you have to go to the second drawing, third drawing, fourth drawing, five. You have to make changes in each and every drawing. Agreed? However, it is not the case with Revit. If you are changing something in your model or your sheet, okay, let's say you have 10 sheets of any project, and you are making any changes in your one sheet, and that change is also there in another sheet, like 10 sheets or 5 sheets, it will automatically get reflected in the other sheets as well. You are not supposed to go each and every sheet and make changes over there, okay. Not only this, if you have prepared a BOQ or like schedule, ठीक है, लेट्स से आपके शेड्यूल में 10 डोर्स लगे हुए हैं आपकी बिल्डिंग में, एंड फॉर सम रीजंस और फॉर द अदर यू वांट टू डिलीट वन डोर फ्रॉम योर मॉडल। आपने मॉडल से वन डोर डिलीट किया, वो डोर जितनी भी शीट्स में अवेलेबल था, जहां पर भी उसको दिख रहा था या फिर किसी सेक्शन में, किसी एलिवेशन में, ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, आपने जो BOQ बनाया था उसमें देयर वर 10 डोर्स इनिशियली, नाउ 9 डोर्स रह गए, तो ऑटोमेटिकली वो BOQ भी आपका अपडेट कर देगा। BOQ में आपकी क्वांटिटी होगी, रेट होंगे, टोटल अमाउंट होगा, वो टोटल रेट अमाउंट भी सब चेंज हो जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट मैनुअली। ओके सर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यस। schedules कैन नॉट थ्री बी सिक्सटी में जनरेटेड। चेंज हो जाएगा पूरा। यस, आई मीन 360, दैट आई मीन 360 का मतलब क्या है, मैं बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जहां कोई भी पर, व्यू से देखे तो वो मतलब चेंज हो गया रहेगा। हाँ 360 व्यू आता, ओके, एलिवेशन व्यू में फॉर एग्जांपल, हाँ यस, आपने कोई चेंज कहीं पर किया किसी भी जगह पर, फ्लोर पर और मे बी डोर, वॉशरूम एरिया, इंटीरियर एरिया, हम्म। वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे मॉडल में, अगर आपने वो डिलीट कर दिया, शीट में भी नहीं मिलेगा इवन। ओके। उससे रिलेटेड जितनी भी शीट यू हैव अच्छा। जनरेटेड ना, यू विल नॉट फाइंड ओवर देयर, लाइक, मतलब हम्म। इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है ना ये, तो ये ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा हाँ हाँ। इंटेलिजेंट है हम्म, कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है मैनुअल। व्हेन वी डू बिल्कुल। मैनुअल जैसे थिंग्स ना, एक सीट गो अहेड। एक सीट में चेंज किया तो दूसरे सीट में भी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसके बाद में दूसरे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल में भी ये रिलेशन रहेगा क्या सर? एक सेकंड जस्ट होल्ड करो, एक मिनट। अनुराग भाई।
हेलो, यस। सो हाँ वो आई मीन उससे रिलेटेड यहाँ पे भी जो भी रिपरकेशन है किसी शीट का, कहीं पर भी कोई चेंज है तो वो इट विल बी डन ऑटोमेटिकली। ऑटोकैड में ओके। आपको हर एक शीट में मैनुअली जाकर चेंज करने हैं। ऑटोकैड इंटेलिजेंट नहीं है, राइट। वेरेस रैविट इंटेलिजेंट है, यस वो सर, यस। कोई भी चीज कहीं भी आ रही है उसको वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। नेक्स्ट इज schedules कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम 3D मॉडल्स और 2D ड्राइंग्स, राइट। स्केड्यूल का मतलब है यस जो हम सर। बीओक्यू, जैसे जैसे वी हैव डोर स्केड्यूल, बार बेंडिंग स्केड्यूल, वो स्केड्यूल्स यू कैन नॉट प्रिपेयर इन ऑटोकैड, नहीं बनता है ना ऑटोकैड में, हम तो एक्सेल में बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर जो है यस। दूसरी शीट में जाके हमें बनाना होता है। बट रैबिट में ऑटोमेटिकली वो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। आई एम सॉरी। सो इसमें लाइक रैबिट में you will prepare that schedules, bar bending schedule within 1 or 2 hours, ठीक है। जो मैनुअल वे में करने से आपको आधा दिन, एक दिन लग जाता है, मे बी 2 दिन लग जाता है, ठीक है। दैट यू कैन डू विद इन आवर्स इन Revit। कैन नॉट परफॉर्म एनर्जी एनालिसिस इन Revit, we can perform energy analysis. For example, you are an architect and you want to design your घर in a good way, like sustainable, okay, कि कम से कम मेरा एनर्जी यूज हो, साउथ फेसिंग ना हो, सोलर रेडिएशन किस तरफ से ज्यादा आती है, that you can all analyze in Revit. Revit is also analysis software. It is very good for architects. It is also very good for HVAC analysis. Heat venting, heat venting, एयर कंडीशनिंग एनालिसिस होता है एक बिल्डिंग में कितना एसी लगेगा, कितना कम से कम खर्चा होगा, दैट ऑल यू कैन ऑप्टिमाइज विद द हेल्प ऑफ Revit, ठीक है। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू एमईपी फिजिकली, बट वी कैन डू दैट। these are the main advantages. We do have a lot more advantages, but yes, these are the main one. Now see, this is an AutoCAD drawing, correct, powerhouse building ka, and this is the Revit drawing. You can see the difference. Can you imagine the difference? यस सर। Which one is better? Which one is looking better? Obviously ऊपर वाला is looking better, right? इसमें आपको कितना कुछ समझ नहीं आ रहा ना ज्यादा। There is no much, understand. The people will not be able to, like we are engineers, we can understand obviously, but जनरल आदमी को तो ये ड्राइंग ज्यादा समझ में आएगा ना, क्लियरली। यस सर। करेक्ट। एक कंपैरिजन आई जस्ट वांट टू टेल यू, ठीक है। आई वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल। दिस इज Mercedes, maybe in 90s or 2000. Now this is the present model of Mercedes, correct, right? This is interior of this Mercedes back in maybe 1990s or 2000. Now this is the interior of current Mercedes model. So it is like Revit and AutoCAD is basically, you can say, AutoCAD is an old version of Mercedes. You can say that, correct? There were very like number of things, those were manual. वो याद है पहले हम शीशा गाड़ी का वो हैंडल होता था, उसको ऐसे रिवॉल्व करते थे, शीशा ऊपर हो जाता था, नीचे होता था, राइट? यस सर। यस सर। रिमेम्बर? हाँ सर। यस ठीक सर। है। अब क्या होता है, ये होता है लाइक पावर लॉक होते हैं सब, है ना। उसको आप एक छोटा सा बटन होता है, उसको नीचे करते हैं, ग्लास डाउन जाता है, एंड देन you just put it up, so glass will be closed यस and सर। come up. So it is more or less like that. AutoCAD is basically kind of, you are doing a lot of manual thing nowadays, okay. Revit is an enhanced version of that, like not only 2D, you can perform 3D as well with very modern functions, okay. Initially, I mean, in the previous days, like I remember when we my maternal uncle used to have Maruti 800. Maruti 800, you might have seen, people also have seen that. There used to be manual things, window opening,
glass opening manual, and then there were no ACs in that as well. There was fan only. Okay. In fact, there was no this GPS as well, global positioning system, जो